Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope students you are doing well. Chapter 15 sampling distribution is under discussion today, lecture number 13, and the third topic is going on sampling distribution of sample proportions P head. Now students, in this lecture I will discuss an exercise question by sampling with replacement using sample size n equal to 2. Now students, kindly subscribe to my channel and give your feedback. Let's start the topic sampling distribution of sample proportions P head with an exercise question. The contents of this lecture is based on an exercise question for sampling distribution of sample proportions P head by sampling with replacement using sample size n equal to 2. Now I am going to start an exercise question for sampling distribution of sample proportions P head. In the statement of this exercise question, take all possible samples of size 2 letters each by with replacement from the letters of the word hen. गिवन हैंड वर्ड से स्टूडेंट्स हम लोग ड्रॉ करेंगे साइज 2 के लेटर्स बाय विद रिप्लेसमेंट प्रोसेस. In the first part, find the proportion of letter E in each sample. In the second part, make sampling distribution of sample proportions P head. Also find its mean and variance. In the third part, find the population proportions P of letter E from the word hen. And fourth part is that for verifications or verify करेंगे results. First one is the mu P head equal to P population proportions and sigma square P head equal to PQ over N. And these two verifications are verified by using these all steps involved in the sampling distribution of P head. Now we have the word hen and we have to make the samples of size 2 by this sampling with replacement. First we write the capital N which is equal to 3 तीन letters हैं total और sample size students use करेंगे which is 2 letters का एक sample हम draw करेंगे by sampling with replacement and using formula for sampling with replacement is n power n 3 square O equal to 9. Total 9 samples students draw करेंगे serial number में 1 to 9 आप write कर लें और then हम लोग जो है samples को draw करेंगे. फर्स्ट सैंपल को ड्रॉ करने के लिए आपने फर्स्ट जो है अपने 9 को जो है वो डिवाइड कर दे अपनी पॉपुलेशन साइज पे. पॉपुलेशन साइज इज 3 और 3 को 9 से कैंसिल करें विच इज 3 और फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड हैन इसको हम राइट करेंगे 3 टाइम्स. तो एच को स्टूडेंट्स आप लोग राइट करें 3 टाइम्स वर्टिकली एच एच एंड एच और देन फिर आपने नेक्स्ट जो वर्ड है ई इसको राइट करना है 3 टाइम. तो नेक्स्ट आपने ई राइट करना है 3 टाइम और देन फिर आपने नेक्स्ट वर्ड जो है एन इसको भी 3 टाइम हम राइट करेंगे 7 8 एंड 9 सैंपल्स के ऊपर. और देन स्टूडेंट्स आपने नेक्स्ट स्टेप फॉर विद रिप्लेसमेंट के लिए अगेन 3 को कैंसिल कर दें 3 से और आपके पास आंसर इज 1 और इट मीन्स कि आपने हर लेटर को 1 टाइम राइट करना है अपने सैंपल्स में. तो H को राइट करेंगे 1 टाइम देन फिर आपने E को राइट करना है 1 टाइम और N को राइट करना है 1 टाइम. तो H E N और देन अगेन इसको इसी सीक्वेंस के साथ आपने राइट करते जाना है H E N और देन फिर आपने 7 8 एंड 9 सैंपल्स के ऊपर H E N N को राइट कर देंगे. तो इन दिस वे स्टूडेंट्स यू कैन फाइंड द सैंपल्स 9 सैंपल्स from the word hen. Then students हम लोग find करेंगे P head. P head is the proportion of letter E which is equal to x over n. x आपका letter E की proportions को हम लोग find करेंगे total sample size n से. और first जो आपके पास sample है H इसमें कोई आपके पास letter E नहीं है तो proportions आपके पास होगी यहाँ पे 0/2 और then नेक्स्ट में आपके पास लेटर ई 1 टाइम है टोटल 2 में से तो 1/2 राइट कर दें. नेक्स्ट में आपके पास कोई लेटर ई नहीं है 0/2. नेक्स्ट अगेन आपके पास एक लेटर है ई फोर्थ सैंपल में विथ आई राइट 1/2. देन आपके पास फिफ्थ सैंपल में 2 ई हैं टोटल 2 लेटर्स में से तो 2/2 राइट कर दें प्रोपोर्शन. सिमिलरली नेक्स्ट में 1/2. नेक्स्ट आपके पास 7th सैंपल में कोई लेटर ई नहीं है 0/2. नेक्स्ट में 1/2 एंड लास्ट वन इज आल्सो द 0/2. इन दिस वे स्टूडेंट्स आप लोग जो है वो हर सैंपल से लेटर ई की प्रोपोर्शंस जो है उसको फाइंड कर लेंगे और देन फिर हम लोग जो है इन नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो है वो प्रोपोर्शन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन प्रिपेयर करेंगे फॉर प्रोपोर्शंस पी हेड फॉर द लेटर ई.
Now in step 2, we make the sampling distribution of sample proportions p hat. We have to find the values of p hat as in step 1. We have the values 0 by 2, 1 by 2 and 2 by 2 is right in first column p hat. Then write the frequencies of the each p hat. 0 by 2 appears 4 times, 1 by 2 appears 4 times and 2 by 2 appears 1 time. Then find the frequency summation f, which is equal to 9. In third column we have to find the relative frequency of each p hat. First one is the 4 by 9, 4 को 9 पे डिवाइड कर दें, देन आपके पास 4 by 9 फॉर 1 by 2 और देन फिर आपके पास लास्ट वन 2 by 2 के लिए 1 by 9. These are the relative frequencies of p hat और इनका सम जो है वो always equal to 1 होगा. And then in second, third and fourth last two steps के अंदर स्टूडेंट्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे p hat into f of p hat and p hat square into f of p hat for mean and variance. So these two columns are prepared in this step for mean and variance. p hat के कॉलम फर्स्ट कॉलम को स्टूडेंट्स आप लोग रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी f of p hat से मल्टीप्लाई कर दें. 0 by 2 multiply 4 by 9, answer is 0 by 18. 1 by 2 is multiply 4 by 9, answer is 4 by 18. and last one 2 by 2 multiply करें 1 by 9 से answer is 2 by 18. और then इस कॉलम का स्टूडेंट्स हम लोग सम कैलकुलेट करेंगे p hat into f of p hat which is equal to 6 by 18. Last column used for variance of p hat square into f of p hat. First one फर्स्ट कॉलम को अगेन आप मल्टीप्लाई कर लें फोर्थ कॉलम p hat into f of p hat से and you can get the values of the p hat square into f of p hat. First value 0 by 2 multiply 1 by 0 by 18, answer is 0 by 36. 1 by 2 को मल्टीप्लाई करें 4 by 18 से आंसर इज 4 by 36. डिनोमिनेटर्स और न्यूमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे 2 by 2 multiply 2 by 18, आंसर इज 4 by 36. Then find the its sum and answer 0 by 18 plus 4 by 36 and plus 4 by 36, answer is 8 by 36. This is the sum of p hat square into f of p hat. Now in the same step we have to find the value of mean and variance for the sampling distribution of p hat, and the required sums are right on the right hand side. We have summation p hat into f of p hat equal to 1 by 3 and summation p hat square into f of p hat equal to 2 by 9. First we write the formula for mean of sampling distribution of p hat is mean of p hat equal to expected value of p hat. Now open this formula expression p hat into f of p hat और इसका आंसर स्टूडेंट्स ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं which is 1 by 3. वेरिएंस के लिए सबसे पहले राइट करेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ p hat square which is summation p hat square into f of p hat और इसका आंसर स्टूडेंट्स हमने कैलकुलेट किया है 2 by 9. और then write the formula for variance of p hat sigma square p hat equal to expected value of p hat square minus एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी हैट होल स्क्वायर. दोनों के रिजल्ट्स को स्टूडेंट्स हम लोग पुट कर देंगे इस फॉर्मूला में और आपके पास यहाँ पे 2 by 9 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी हैट स्क्वायर एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पी हैट इज 1 by 3. इसका स्क्वायर यूज करेंगे और देन इसको माइनस करेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर इज 1 by 9 फॉर वेरिएंस ऑफ पी हैट सिग्मा स्क्वायर पी हैट. In this way students, using these formulas we can get the values of the mean of p hat and variance of p hat. Now in third step, I will have to find the population proportions P of the letter E from the given word hen, where we have the population size n equal to 3 and sample size equal to 2, and the letter E is one time appear in the word hen. So P equal to x over n, that is the formula for population proportions, and x equal to 1 and total number of items population size is 3. तो p की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास 1 by 3 है एंड q इज इक्वल टू 1 minus p. q को हम फाइंड करेंगे यूजिंग 1 minus p फॉर्मूला और p की वैल्यू पुट कर दें 1 by 3, q इक्वल टू 2 by 3. तो दिस इज द population proportions p and against proportions q is 2 by 3. Now in step 4, use verification formulas by sampling with replacement to verify the results. First verification is that mu p hat equal to p. mu p hat की वैल्यू स्टूडेंट्स हमने इसको फाइंड किया है यूजिंग सैम्पलिंग रिजल्ट्स एंड
which is equal to 1 by 3, and population proportions of the letter E from the word hen is also 1 by 3. And first verification has been verified, and second verification is that sigma square p hat equal to pq over n. राइट साइड पे स्टूडेंट्स मैंने इसके रिजल्ट्स को राइट कर दिया है, p इक्वल टू 1 by 3 एंड q इक्वल टू 2 by 3, एंड वेरिएंस ऑफ p hat, that is the sigma square p hat from the sampling distribution of sample proportions p hat is also find 1 by 9, और इसको हम पुट कर देंगे राइट लेफ्ट साइड पे 1 by 9, और राइट साइड के रिजल्ट्स जो है वो p इक्वल टू 1 by 3 एंड q इक्वल टू 2 by 3 यूज करेंगे, और सैंपल साइज आपके पास गिवन है विच इज 2, और राइट साइड को सिंप्लीफाई करेंगे विच इज 1 by 9. तो सेकंड वेरिफिकेशन इज आल्सो वेरीफाइड. तो यूजिंग these two verifications by sampling with replacement, verify the results by using formulas. In this lecture, an important exercise question has been discussed for the sampling distribution of sample proportions p hat by sampling with replacement using sample size n equal to 2. इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ. अपना ख्याल रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक जरूर दें. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू.